बैंकिंग में हमने एक शिफ्ट देखा है दमानी जी, एक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक बड़ा मूव आ रहा है। ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स थे हमारे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और जो अर्स्टवाइल आउट परफॉर्मर्स थे जैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक, वो थोड़ा सा 2-3 साल से 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये क्या इंडियन इकोनॉमी पे मार्केट बेट ले रहा है कि एक क्लीन अप पे बेट ले रहा है? पीएसयू बैंकों में भी जिस तरीके की रैली आ रही है, एसबीआई खास तौर से, तो ये क्या एक मार्केट एक किस चीज के ऊपर मार्केट इसमें बेट ले रहा है? आई थिंक टू थिंग्स, एक क्लीन अप हो गया इनका, एंड गुड क्रेडिट साइकिल, कैपिटल साइकिल इज अहेड, सो दैट इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फॉर बोथ द सेक्टर। एक शेयर बाजार का फंडामेंटल एक्सियम है अनुज, दैट जैसे आपकी मदर ने आपको शॉपिंग में सिखाया था कि रुपये की चीज़ अपने को 98 में खरीदनी है, एंड बेसिकली वी आर गेटिंग दीज बैंक्स एंड पीएसयू, लॉट ऑफ दीज कंपनीज इन द बेयर मार्केट प्रीवियसली 98 में, 40 पैसे में, 30 पैसे में. So ultimately they will rise in value because you can't keep trading these stocks at 30% of the value because the earnings are there, the growth is there, and the quality of earnings is there. So I think उसमें यही हुआ है, थोड़ा re-rating हो रहा है सेक्टर का. Over long term, over say a 5-10 year period, can the PSU banks compete with the private sector banks? I don't think they can. I think the private sector banks in terms of credit card, in terms of quality of loans will do extremely well compared to the public sector banks. But अगर आप इतने सस्ते खरीदिए, you can double your money, maybe even triple your money in the bank before you have to worry about these things. So I think there's a great trading opportunity in public sector banks. अगर आप बोले कि आप 10 साल हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, मेरे को बताओ कौन से PSU बैंक लेना है, I would probably not be able to tell you too many picks there. ठीक है. नहीं, अच्छा दमानी जी, ये जो आपने बात बोली ना कि रुपए का माल 54 या 98 में मिलता है, तो मुझे एक वो कहावत याद आ रही है. मुझे पता करना है कि एक्चुअली किसने कहा था, राकेश जी ने कहा था या राधा कृष्ण जी ने कहा था कि जब रुपए का माल 54 में मिले तो आपकी जेब में 54 होनी चाहिए? the actual saying was, शेयर बाजार में कभी कभी लाल किला 5 रुपये में मिलता है, बट अपने पास 5 रुपया भी नहीं रहता है उस टाइम. The idea is that sometimes you get such great bargains in the stock market, but we don't even have that money at that time. And it was said by the latter person, Mr. Damani, to me at least. हाँ, ठीक है. तो जो आपके इतने गुरु रहे हैं, ये दमानी जी भी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, और जिनसे आपने काफ़ी कुछ मार्केट को लेकर जिन चर्चा करी है आपने, और ग्लोबली भी आपने काफ़ी लोगों को फॉलो किया है, तो कुछ एक आध इंटरेस्टिंग नगेट्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो उनको फॉलो करने चाहिए? Sure, I'll tell you more importantly, जब मैं आया था शेयर बाजार में 98-89 में आया था, इट्स लाइक सपोज आपको अमेरिका भेज दूँ मैं, और आप फर्स्ट 3 हफ्ते अमेरिका में रहे, आप चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच से मिल लिए, एंड यू स्टे नेक्स्ट टू देम एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स, यू वुड से वाओ, आई एम सच अ लकी पर्सन. जब मैं 89 में आया था, अमंग द फर्स्ट 3 पीपल आई मेट वाज चंद्रकांत संपत, who taught me the value of compounding. He is no longer there, but जो compounding मैंने सीखा जिंदगी में, and that has made all the difference in my life. I learned from Chandrakant bhai. I met R.K. Damani. उन्होंने मुझे सिखाया, एक तो एक वैल्यूएशन होता है शेयर बाजार का, और एक वैल्यूज होता है in life. He's taught me both of these things. So I was very lucky to have learned from the side of someone like that. And of course, Rakesh, how to bet, I mean, you know, how to have opinions, how to feel about the market, how to be focused on the market. I learned from them. And they all happened within the first few weeks of me coming to India. So I was extremely lucky that I met them. The common thread between all of these people and a few other, Nimesh Shah, Durgesh Bhaiyov, the common thread between Kamal Kabra, all of us was that, Anuj, there are different camps in the market. And 80s, if you remember, there's a camp that said, कि हम बड़े हैं, या हम यूटीआई को पहना देंगे शेयर, या हम एलआईसी को दे देंगे शेयर, या हम कबाड़ा कर देंगे बाजार में. This group of people that I mentioned to you believed very strongly that markets will allocate capital and earnings wisely, and that you can make legitimate long-term money by investing in great Indian businesses. उस टाइम in 80 the mindset was completely different. कबाड़ा कर लेंगे, प्लेस कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, कुछ हो जाएगा. This operate group, operate कर देंगे. This group of people whom luckily I happen to fall in touch with, who truly believe that the markets are supreme, markets allocate capital wealth, and markets is the place to create long-term wealth by compounding. And over time, if you see all the businesses that have become great, you know, the Levers of the world, the Nestle's of the world, the Reliance of the world, have compounded for investors over long periods of time by building a great business and not by doing up and downs in the share. So luckily for me, I got into the right company, and
been extraordinary influences in my life. चलिए अब एक काम करते हैं, दमानी जी का एक नया शो शुरू हो रहा है हमारे सिस्टर चैनल पर, विजर्स की, जिसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले हुई थी दमानी जी। Actually, longer than that. 2005 January, I'm told, was the first show, and my first guest, of course, was none other than Rakesh भैया, हाँ। Right, and it's so sad that this time we'll be paying a tribute to him rather than having him live, but he's been an extraordinary force in Indian capital markets. और उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट्स हैं सेफ हैंड्स में हैं, लेकिन अब आप उनको भी फीचर कर रहे हैं मेरे ख्याल से, उत्पल जी को और शायद। Yeah, I'm going to call his partners. I'm going to call his favorite CEO, Bhaskar Bhatt. I'm going to call his lawyer and trustee and executive as well. So I'm going to call his contemporary, Jay Kumar, to speak about his life and legacy and learnings, which, he was obviously the uncrowned king of Dalal Street. Absolutely. In fact, when he went to Delhi and met Prime Minister Modi, people said he's now the crowned king of Dalal Street. But an extraordinary life, and it's a very strong legacy, and we hope to, bring that out for your audiences. Life well lived. जैसे वो movies का जिक्र करते थे कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए. He lived his life king size. He lived his life king size, and he had no regrets. And the one thing I found fascinating about him was that he went through a lot of ill health in the last 2 years of his life. But he never complained, and he was always engaged in the market, from the hospital bed, from the ICU bed. A weaker man would have been complaining, but not him. And he was always engaged in the market. In fact, this bull market that started when the COVID lows, he pretty much called that. He was the first person to call it. So extraordinary life. Absolutely. चलिए एक लास्ट सवाल तो फिर इस शो में ही आपने एक दो बहुत इंटरेस्टिंग मैं गेस्ट देख रहा हूँ, वो जैसे प्रशांत खेमका जी ने काफ़ी अभी रिसेंटली नाम कमाया है, अपने नीलेश सुराना जी को भी बुलाने वाले हैं, कोई एक आध स्पेशल नाम जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो आप। Yeah, Anuj, we are widening the show this time. Instead of just calling people from Dalal Street, we are calling people from private equity, venture capital, mutual fund management. So it'll be a bit wider. जो दो विदेशी नाम I'm quite excited about. We have this lady from Salt Lake City who's very bullish on India, Laura Gerritz. In fact, 25% of her fund she's put into Indian equity. She can invest anywhere in the world. And I asked her, मैंने उनको शो में पूछा था, आपको अगर 1000 करोड़ मिलेगा तो आप कहाँ डालेंगे, इंडिया में या चाइना में? Thankfully, she said India. So she has a good fan following in India, I'm sure. A very good master of the universe is called David Rubenstein. He's scheduled to come in January. We did Harsha Raghavan today. He's a very good PE investor, done very well for himself. And the like, I think we'll get a very interesting mix of people. Some new, some unheard voices on the street will be coming. So I think it'll make for a fascinating show. And I feel, Anuj, very privileged to be able to host the show. Because of this, I get to meet extraordinary people and bring their stories out to the public. So it's been a great joy and privilege for me to bring that. और देखिए मेरे लिए प्रिविलेज है कि मुझे इस पोजीशन में होने की वजह से दमानी जी से बात करने का मौका मिला। दमानी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जाते हुए हम आपसे थोड़ी और बात करेंगे। और हिंदी में आपने इतना अच्छा इतनी अच्छी बात की, और हमारा इंडिया का टाइम आ गया, ये क्लियर है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडियन रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया, रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। छोटे मोटे स्विंग से घबराइए मत, रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। जो दमानी जी ने भी बोला, पिछले 15-20 साल की कंपाउंडिंग देखिए, इंडियन मार्केट ने सबको बीट किया, इवन वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो को बीट किया। तो एक जबरदस्त मूव, और डिविडेंड को तो हम जोड़ भी नहीं रहे हैं उसमें, जो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दमानी जी, शुक्रिया आपका। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।